अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स। द मेगास्पोरम और ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड स्पोरेक्टिव कोट द इंटीग्यूमेंट। इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय स्टाल्क कॉल्ड फनिकल्स। जो प्लेसेंटा उसके क्या कहता है, फनिकुलस, फनिकल, एंड द पॉइंट अटैचमेंट ऑफ बॉडी इज ओव्यूल इज द फनिकल कॉल्ड हाइलम। जिस पॉइंट से अटैच होती है उसको क्या कहा जाता है, हाइलम। At mature, ovule consists of the nucleus enveloped almost completely by one or two sheaths, known as the integuments, except small opening at the apical end. This opening is called the micropyle. The basal region of ovule, whether it attaches to the placenta or funicles by chaliza, and this side is known as chaliza end. It is opposite term as the micropylar and having the main passage to entry for the pollen tube into the ovules. In this the nucleus female gametophytes present, also known as the embryonic sac. इसको क्या कहा जाता है, embryonic sac कहा जाता है। Nuclear tissue is the parenchymatous and represent the wall of the meganogasporium. The nucleus is mostly consumed by developing embryonic sac. Each ovule has only one nucleus. However, the two nuclei may be occur abnormally with the common fault. Integument has been observed in mangrove. 2. The ovules with single integument are called uni-integument, and two integument is called bi-integument. And is practically plant dorsa without integument atigmic. पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल्स। फनिकल्स का एक स्टाल्क होता है जिस जहाँ से अटैच होता है प्लेसेंटा। न्यूक्लियस का द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स। इंटीग्यूमेंट है, ये क्या काम करता है, प्रोटेक्टिव है। माइक्रोपाइलर एंड का जहाँ से एंट्री होती है पोलन की। चलेजा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल्स है। हाइलम रीजन वेयर अटैच टू फनिकल्स। एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट न्यूक्लियस। टाइप ऑफ ओव्यूल्स हमारे पास है 5 टाइप के, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैमिलियोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमिट्रोपस एंड सिकोट्रोपस। फिर आता है ऑर्थोट्रोपस। इफ द पोजीशन ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड चलेजा एंड फनिकल ऑन द स्ट्रेट लाइन, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाएंगे उसको कहा जाएगा ऑर्थोट्रोपस। If the position of micropylar, chaliza and funicles is the one straight line, then is now with orthotropous because there is no curvature in any straight so upright. इसको कहा था atropous without curvature. It found in the polygonum and Pipereaceae family. Anatropous ovules, unlikely ovules is completely inverted. This all happen because the unilateral growth of ovules. As a result, this position of micropylar and chaliza is one line, but funicles lie parallel. Means micropylar lies very close base funicles. इसको कहा जाता है anatropous. Anatropous की कंडीशन क्या है? Position of the micropylar and chaliza in one line, but funicles से वो parallel आ जाता है। फिर आता है हमारे पास एम्फीट्राइकस। इन एम्फीट्राइकस ओव्यूल्स द curvature of ovules very deep affect the nucleus without embryonic band built horseshoe shape like appearance. This is an example assembly and glutamacy. Amphitrapous ovule curvature होती है, इसके अंदर deep affect the nucleus as well embryonic band. फिर आता है हमारा कैम्ब्रोट्राइपस। Curvature is having caryoptypous ovules but less only anatropous ovules. Micropyle part is bending onward. Due to this curve, micropylar and chaliza could be not lie in the straight line and position of the funicles right angle to the chaliza. फिर आता है हमारा हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस unlike hemitropous ovules, the position of ovule funicle to right angle nucleus and integument position of the micropyle and chaliza is one is. Some members of Plumiaceae exhibit a very particular type of ovule. Hence,
Due to their rapid and lateral growth, ovules first become anatropous, turn over completely. As a result, this continuous growth and curvature, the micropylar end begin again a point upward. Several type of ovules has been named anatropous, orange. ठीक है, पहला हमारा ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, फनिकल, चैलेजला एंड माइक्रोपाइलर स्ट्रेट होंगे. लेकिन सेकंड है हमारा कौन सा, एनाट्रोपस. एनाट्रोपस के अंदर क्या होगा, माइक्रोपाइलर है और क्या होगा, चैलेजला तो आ जाएगा लेकिन फनिकल्स इसके अंदर स्ट्रेट नहीं आएगा. ठीक है. एम्फीट्रोपस है, हॉर्स शू शेप हो जाएगा. Considering the extent of nucleus and position of sporogenous cell, ovules can be categorized in nucleate type and कृषि nucleate type. 10 nucleate type है. There is archiospell cell in the nucleus, epidermal organ, which directly function as the megaspore mother cell. The position of megaspore mother cell is hypodermal, so the nucleus tissue around remains single layered. Such ovules where the position of the sporogenous tissue hypodermal nucleus around the remain single layered का tiny nucleate. Nucleus when it directly function as the megaspore cell, the position of megaspore cell is hypodermal and so the nucleus around remains single layered. Such ovules are position sporogens. ये था हमारा tiny nucleate. कर्षि nucleate type है. Unlike tiny nucleate type, the hypodermal archiospell divides in two cells by mean a transverse division. The outer is the parietal and outer वो हमारा क्या बनाएगा, parietal cell, and inner is the sporogenous tissue. The parietal cell may remain undivided, undergo few division, and these division both pericardial and anticlinal. As a result, these sporogenous cells become embedded in the massive parietal tissue. The sporogenous cell may also be embedded in the massive nucleus by division in nuclear epidendums inward the division archiospell cell. All such ovules where the sporogen cell becomes such subhypodermal, either the कृष्णेट टाइप का ये न्यूक्लियस है. ये था हमारा ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर्स.